अभी मैं मिल्टन से ओकविल गो स्टेशन आया हूँ। यहाँ से मैं टोरंटो जा रहा हूँ बाय ट्रेन, क्योंकि टोरंटो में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और मैं ट्रैफिक अवॉइड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बाय ट्रेन जा रहा हूँ। तो गाड़ी मैंने यहीं पार्क कर दी गो स्टेशन पे। अभी मैंने टिकट ले लिए हैं और मैं वॉक कर रहा हूँ ट्रेन की तरफ। ये यूनियन स्टेशन का टिकट है। यहाँ लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। अभी थोड़ी देर में ट्रेन अराइव होगी। अभी ट्रेन आ गई है। ये ट्रेन का इंटीरियर है और मेरी डेस्टिनेशन है यूनियन स्टेशन टोरंटो। अभी यूनियन स्टेशन पे मैं उतर गया हूँ। ये टोरंटो यूनियन स्टेशन है। ये यूनियन स्टेशन है और अभी हम यहाँ से सबवे की तरफ जा रहे हैं। ये भी हम सबवे का वेट कर रहे हैं। हमें नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाना है। अब हम सबवे एग्जिट कर रहे हैं। ये फर्स्ट कैनेडियन प्लेस है। अभी हम टोरंटो डाउनटाउन के पास आ गए हैं और यहाँ से हम द वेल जा रहे हैं, जो कि नया मॉल है, लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है।
द वेल मॉल जो है ये ओपन मॉल है और इसमें यहाँ नीचे जिस तरह डाइनिंग की प्लेस है बहुत प्यारी, और इस साइड पे भी यहाँ भी डाइनिंग की प्लेसेस हैं काफ़ी प्यारी। फिर ऊपर काफ़ी प्यारी डेकोरेशन है, 3 फ्लोर्स पे है। अभी ये वाला फ्लोर एक्सप्लोर करके फिर नीचे वाला फ्लोर एक्सप्लोर करते हैं। मुझे नीचे वाले की जो डेकोरेशन है वो ज़्यादा पसंद आई है। ये इनका क्लासिक सैंडविच है, ट्राई करते हैं। काफ़ी टेस्टी है काफ़ी। इनका सैंडविच टेस्टी है काफ़ी। मैंने स्पाइसी वाला लिया है, अंदर पिकल्स डले हुए हैं। ये इस तरह की जगह में बहुत प्यारी है, यहाँ बहुत हल्की हल्की ब्रीज चल रही है। ये क्रिसमस लाइट्स हैं, क्रिसमस की डेकोरेशन बहुत प्यारी लगती है मुझे। पेट्रोल की मेरे सामने ईटन है, तो अभी लेफ्ट पे ईटन की पार्किंग है।
मेरे पीछे टोरंटो का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री है जो कि ईटन सेंटर में है। ये भी दिसंबर के एंड में न्यू ईयर्स के बाद ही हटा देंगे।